Okay, assalamu alaikum everyone. Yesterday we actually started up with polysaccharides and we discussed that, and we also talked about reducing sugars as well. So we said that all monosaccharides are reducing sugars, and some disaccharides, with sucrose being an exception, is not a reducing sugar. And then we talked about the test for reducing sugars, which is the Benedict test. Then we talked about polymers and we established that none of the polymers are reducing sugars. Not actually polymers, I would say polysaccharides. Okay, just correct it over here. So we talked about polysaccharides, and the polysaccharides which we are concerned with are basically your starch, glycogen, and cellulose. And we discussed why is there a necessity, or why is glucose the energy reserve, or the molecule which is important for the oxidation in order for ATP to be produced. Why are we not storing glucose the way it is? So we discussed all the factors why glucose needs to be converted into either glycogen and starch. And for cellulose, we discussed that cellulose is basically required for structural support because of its high tensile strength. Then we talked about the condensation process of polysaccharides, and how basically this is the general equation that whenever n number of monosaccharides, because hundreds, thousands, 10,000s of monosaccharides can come together to form polysaccharides. So we give the n number to the number of monosaccharides which are joining together to form one polysaccharide unit. So when n numbers of polysaccharides come together, condense together to form one single polysaccharide, this is basically the general formula of a polysaccharide. And we realize that the only difference between this monosaccharide and this general or the empirical formula or the basic formula of polysaccharide is that H12O6, so we are going to H10O5, which means that one water molecule is being removed at every time two monosaccharides are being formed or are getting together or are forming a glycosidic bond. And we established that when A and B monosaccharides come together, one water is lost. When B and C come together, another water is lost. When C and D come together, another water molecule is lost. So we are realizing कि हमारे पास जब 4 monosaccharides थे, and these 4 monosaccharides formed a polysaccharide, how many waters are we losing? We're losing 1, 2, and 3 water molecules. So we realized that whatever is the n number of monosaccharides forming a polysaccharides, the number of water molecules lost will always be one number less than our monosaccharides number. So this is what we studied yesterday. And yeah, so Abiha, you missed yesterday's class, so you can go and refer to the recording. And if there is anything that's unclear, then you can obviously ask me. Now for today, we are going to discuss the structure and the function of all the three polysaccharides which we are concerned with, which are starch, glycogen, and cellulose. Now, for starch. For starch, we said that there are basically two molecules which are making up starch. यानी starch में हमारे पास दो different molecules present होता है और उनके mixture को हम starch कह रहे होते हैं, which are amylose and amylopectin. Now starch is basically a polysaccharide of your alpha glucose. So obviously both amylose and amylopectin are made up of what? Both of them are made up of alpha glucose. Now, let's assume that one circle is an alpha glucose monomer. So let me draw something. Now. So basically, the structure of amylose looks something like this. So if you could notice, it's a spring-like
helical structure. So the orientation or the structure of amylose is basically helical. ठीक है, इस तरह से आपके अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स जो हैं वो अरेंज होते हैं इन एन अमाइलोज मॉलिक्यूल. नाउ ऑब्वियसली इन सारे अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स को जो बॉन्ड्स कनेक्ट कर रहे हैं वो कौन से बॉन्ड्स हैं? वो हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं. ठीक है. So one thing that we can appreciate in the structure of amylose is that it is helical. तो एक तो हमें ऑब्जर्व ये हो रहा है कि हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. देन अनदर थिंग इज दैट हमारे पास इसमें बॉन्डिंग क्या है? इसमें बॉन्डिंग बेसिकली 1 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है. ठीक है जी, अल्फा 1,4 glycosidic bonds. Now, another thing that we have to appreciate over here is that हमारे पास अगर मैं ends की बात करूँ, free ends, open ends, वो कौन से हैं? एक हमारे पास ये एंड है और एक हमारे पास ये इसका एंड है. बीच में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल है, वो एक स्प्रिंग लाइक है. एंड्स अगर मुझे इसके हाईलाइट करने हो तो मेरे पास दो ही एंड्स हैं इसके. नाउ subsequently if I draw the structure of amylopectin, तो amylopectin का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. एंड इस स्ट्रक्चर के लिए आई कैन, ये भी ऑब्वियसली हमारे पास अल्फा ग्लूकोज मोनोमर से बना हुआ है. ओके. सो बेसिकली हमारे पास जब भी दो मोनोमर्स आपस में कोई बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो जो वो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है हमारे ग्लूकोज मोनोमर्स के बीच में, वो जो बॉन्ड होता है, यानी फॉर एग्जांपल ये अल्फा ग्लूकोज और ये अल्फा ग्लूकोज आपस में अगर कनेक्टेड है तो एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 वुड बी इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग. सो ये हमारे पास जब भी दो मोनोमर्स आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो हमेशा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 में बनाते हैं. बेसिकली हमारे पास जो ये नंबरिंग है वो ये बता रही है कि हमारे पास जो ये बॉन्ड है या ये फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से कार्बन नंबर पे प्रेजेंट है. So whenever two glucose molecules or two monosaccharides form a connecting bond, that bond specifically for glucose is what? It is the 1,4 bond. क्योंकि glucose का carbon number 1 और carbon number 4 are basically involved in the bond making in the condensation process. Now, if you could notice, हमारे पास इस structure में branching हुई है, यानी मेरी ये एक ब्रांच है, मेरी ये एक ब्रांच है और ये एक मेन ब्रांच से कनेक्टेड है. सो देयर इज अ ब्रांचिंग. सो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में यहाँ पर तो जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी. ओके, माय स्क्रीन जस्ट ग्लिच. आप लोगों ने कुछ मिस तो नहीं किया है? कोई ग्लिच तो नहीं आया आप लोगों के एंड पर? सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि हमारे पास जो अल्फा ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं उन मोनोमर्स के बीच में जो हमारे पास बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग किस किस्म की होगी? वो बॉन्डिंग लाइक हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हो गए. लेकिन देयर मस्ट बी अ बॉन्ड व्हिच इज कनेक्टिंग दीज ब्रांचेस, राइट? तो जहां जहां पर भी आपको ब्रांचिंग नजर आ रही है तो ब्रांचेस को जो बॉन्ड कनेक्ट कर रहा है वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो हमारे पास अल्फा 1,6 glycosidic bond होता है. So the bond between monomers or the bond between alpha monosaccharides is what? It is basically हमारे पास जो हम अब तक condensation reactions का bond पढ़ते आ रहे हैं 1,4 glycosidic bond वही है. लेकिन branches को आपस में कौन से हमारे पास link कर रहे हैं? क्या कहते हैं bonds? वो हमारे पास 1,6 bonds हैं. और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर अगर एक अल्फा ग्लूकोज का मोनोमर है, ठीक है, अब उसको कनेक्ट करने के लिए ये हमारे पास लिंक होगा इस ब्रांच के साथ, राइट? सो इनमें से कोई मुझे बता सकता है कि किसका अल्फा 1 इन्वॉल्व होगा और किसका अल्फा कार्बन 1 इन्वॉल्व होगा और किसका कार्बन नंबर 6 इन्वॉल्व होगा? टेल मी, इसका कार्बन 6 इन्वॉल्व होगा या इसका कार्बन 6 इन्वॉल्व होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? So you're saying which one? The upper one is involved with what? 1 or
6. So basically you are saying इसका 6 इन्वॉल्व होगा और इसका 1 इन्वॉल्व होगा, राइट? दैट्स करेक्ट. ठीक है. और ऐसा क्यों होगा? दैट्स बिकॉज हमारे पास जो ये वाला कार्बन है, दिस वन, ये इसके साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, करेक्ट? और ये वाला इसके साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है विद दिस. तो हमारे पास एक का 6 कार्बन एंड फ्री होगा और एक का 1 कार्बन एंड फ्री होगा, राइट? तो एक का हमारे पास, let me even show you from the picture of the start amylopectin molecules. So you see, this is how the branching is occurring. If you could see the picture. तो हमारे पास ये एक separate chain चल रही है, ये एक chain चल रही है, एक linear structure है, ये एक linear structure है. And if you could notice, दो monomers के बीच में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है? दो monomers के बीच में हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है. और हमारे पास जो दूसरे मोनोमर्स हैं उनका क्या है? उनका बेसिकली ये है कि उनका जो भी हमारे पास रिमेनिंग एटम है, राइट, इसका यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्व है? दिस इज बेसिकली 1 एंड दिस इज बेसिकली 6. तो हमारे पास एक कार्बन का अगर 4 वाला एंड जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, इस तरह से, तो वो फिर दूसरा उसका जो OH है, जो कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट है, वो दूसरे चेन का जो भी हमारे पास आउट ऑफ द रिंग OH है उसके साथ वो एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है, इस तरह से, इस तरह से कि इनिशियली अगर ये बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता तो क्या होता? अगर ये बॉन्डिंग नहीं होती तो हमारे पास CH2OH होता, राइट? बट बिकॉज हमारे पास यहाँ पर एक OH था, तो व्हाट हैपेंड वाज कि इस कार्बन ने अपना H लूज कर दिया और इसने अपना OH लूज कर दिया एज वाटर, और यहाँ पर कॉन्डेंसेशन हो गई टू फॉर्म एन अल्फा 1,6 glycosidic bond. Okay, so this is basically the structure of amylopectin and the structure of amylose for you. Now let's read these points out. So amylose and amylopectin both collectively make up our starch polysaccharide. ठीक है? Both of them are made up of alpha glucose monomer. So we can say कि हमारे पास जो starch है, it is the polysaccharide of alpha glucose. Okay? Now, amylose can be understood that it has a helical spring-like structure, and उसमें खाली एक ही तरह का हमारे पास bond observable था, which was alpha 1,4 glycosidic bond. On the contrary, in amylopectin एक branch structure है, helical spring-like structure नहीं है. So amylopectin is a non-helical structure. And when we talk about amylopectin, it has two bonds. One of them is alpha 1,4 glycosidic bond, and the other one of them is alpha 1,6 glycosidic bond. So there are two bonds present, two different types of bond present in amylopectin. Both of them, however, आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के जो बन रहा है वो कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बन रहा है, चाहे वो अल्फा 1,4 हो या अल्फा 1,6 हो. सो बोथ ऑफ देम आर एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. नाउ amylose is not branched. On the contrary, amylopectin is a branch structure. Now, a very important question, and is sometimes asked in the paper as well, that which one of these two, amylose and amylopectin, is more resistant to digestion. Now, what do we mean by this? हमारे पास पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड के लिए हमने कल ही अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास जब भी बॉडी में अगर प्लांट सेल्स हैं तो प्लांट सेल्स का जो स्टोरेज मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? स्टार्च होता है. और एनिमल्स में हमारे पास जो स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है वो ग्लाइकोजन होता है. सो व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन द concentration of glucose, that is when these polysaccharides are broken down into glucose, ताकि जो ग्लूकोज की जो कमी है उसको हम ओवरकम कर सकें. द डिक्रीज्ड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कैन बी ओवरकम, राइट? तो हमें क्या करना होता है उस टाइम पर? द polysaccharides have to undergo a hydrolysis. They have to break down. ये हमारा बॉन्ड टूटेगा, ये हमारा बॉन्ड टूटेगा, और हमारे पास वापस से ग्लूकोज मोनोमर्स आ जाएंगे. और वो किस तरह से बॉन्ड टूटेगा कि हमने जो वाटर रिमूव किया था कंडेंसेशन के टाइम पर, वही वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड कर देंगे अपने बॉन्ड्स में. तो हमारे पास वापस से यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ CH2OH आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा. यहाँ पर भी ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये OH बन जाएगा, और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन वापस आ जाएगा. So basically by the addition of water molecule, we will be able to break down this bonding.
Now, why are we saying that amylose is more difficult to digest? यानी amylose digestion को breaking down को hydrolysis को ज्यादा resist करती है, यानी कि amylose की digestion या amylose को break down करना into alpha glucose monomers is relatively harder. On the contrary, amylopectin को ज्यादा आसान है digest करना या उसको break करना into simpler glucose molecules. Why do you think this is happening? ऐसा क्या फर्क है between amylose and amylopectin, which is making one of them more digestive and the other one of them less digestive? What do you guys suggest? What caused the branching? So you were saying that right here. तो हमारे पास basically है क्या? हमारे पास amylopectin में there are just more free ends. What do I mean by that? When I drew the structure of amylose, I said कि amylose में हमारे पास दो ही free ends है, यानी सिर्फ दो ही जगह से हमारे पास एंजाइम अटैक कर सकती है, राइट? बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो मेरे पास, मैं यहाँ से ब्रांचिंग को तोड़ सकती हूँ, जहां जहां पर ब्रांचिंग होगी, जहां जहां पर फ्री एंड होगा, वहां वहां से मेरा एंजाइम एक्शन कर सकता है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अमाइलोज यहाँ से तोड़ेगा या यहाँ से तोड़ेगा, राइट? वो बीच में से नहीं तोड़ सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपको भी एक स्ट्रेट चेन ओपन करके स्ट्रक्चर दिखा दिया. इन रियलिटी वो इस तरह से, जो ये आपकी लीनियर स्प्रिंग का एक लीनियर स्ट्रक्चर है ऐसा, वो एक्चुअली एक स्प्रिंग की तरह कॉम्पैक्ट हुआ हुआ होता है. तो उसमें आप खाली जो एंड्स हैं उन्हीं को अटैक करके उनको तोड़ सकते हो, आप बीच में से अटैक नहीं कर सकते. इसको बिल्कुल उसी तरह से आप समझने की कोशिश करें जिस तरह से हम जब केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं कि हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर आप बढ़ा दें. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये ब्लॉक है और मैं इसी ब्लॉक के अगर 4 पीसेस कर दूं, तो पहले मेरे पास कितनी साइड्स अवेलेबल थी? 1. मेरे पास पहले 1 2 3 4 साइड्स अवेलेबल थी और ऑब्वियसली बैक एंड फ्रंट तो 6 साइड्स अवेलेबल थी. बट अगर मैं इसी ब्लॉक को 4 डिफरेंट पीसेस में ब्रेक कर दूं, तो मेरे पास 1 2 3 4 एंड देन लाइक 6 फॉर ईच, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रंट एंड बैक भी अगर हम इंक्लूड कर दें, तो अगर हम किसी चीज को रिलेटिव उसके पीसेस में तोड़ दें या ब्रांचिंग कर दें, सो देयर इज जस्ट मोर सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एंजाइम टू एक्ट. तो इस एग्जाम्पल से, इस एनालॉजी से आप अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि व्हाई ब्रांचिंग इज वन ऑफ द रीजंस दैट digesting or breaking down an amylopectin molecule into smaller glucose molecules is easier. So is this clear that why it is difficult to break down amylose? On the contrary, it is easy to digest amylopectin. Any questions about it? Okay. Now moving on. Now for amylose, हमारे पास amylose में जो glucose monomers होते हैं वो relatively कम होते हैं. So we basically have a lower MR, क्योंकि MR क्या है कि जितने भी molecules हैं उनका mass, relative mass क्या बन रहा है. So amylose has relatively lower MR in comparison to amylopectin. Why? Because हमारे पास amylose में ज्यादा glucose monomers हो रहे होते हैं because of branching, और हमारे पास amylose में कम ग्लूकोज मोनोमर्स होता है. अच्छा, हमारे पास स्टार्च की प्रेजेंस का एक टेस्ट होता है जो हम लोग अपने सेकेंडरी साइंस की वो टेक्स्ट बुक से पढ़ते आ रहे हैं, और वो ये है that our iodine solution is basically reddish brown solution. If we add that iodine solution to a specimen or to a sample which consists of starch, तो starch क्या करता है, वो उस red brown iodine solution को convert कर देता है into blue black. So a presence of starch is confirmed if the iodine solution is turned from red to blue black. Now, the component or the molecule which is responsible for this staining is amylose. Amylose की वजह से, amylose की presence की वजह से हमारे पास जो starch है उसका solution का color reddish brown से क्या हो जाता है? Blue हो जाता है. However, our amylopectin does not stain, does not cause the color change of iodine solution. And obviously starch दोनों चीजों से बनी हुई होती है, तो amylose भी present होगा एक starch molecule में. तो हमारे पास amylose की वजह से जो starch टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट दे रहा होता है,
वो अमाइलोज की वजह से बुरा होता है, because amylose is responsible for converting a reddish brown iodine into blue black state. ठीक है? Now, is starch clear? Any questions about it?